Good morning, friends. So, welcome to the Prelims Booster session. So, let's see the first topic, which is Pencil Portal. तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने एक तरह से अपील किया लोगों को कि वो जो पेंसिल पोर्टल जो लॉन्च की हुई है चाइल्ड लेबर के इश्यूज़ को रिपोर्ट करने के लिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं चाइल्ड लेबर के जो इंस्टेंसेस हैं उनको रिपोर्ट करें। ठीक है, तो एक चाइल्ड हेल्पलाइन भी है 1098। अगर आपको चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ पता है या कहीं पे प्रैक्टिस हो रहा है तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो इस नंबर पर। ठीक है, या फिर आप पेंसिल पोर्टल पर भी उसकी जानकारी दे सकते हो। ठीक है, तो अब जो है 12 जून को एक तरह से वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो मनाया जाता है। तो ये ILO ने इसको मनाना शुरू किया था 2002 से। तो इसी दिन पर जो है पेंसिल पोर्टल के लिए भी उन्होंने एक तरह से अपील किया है। ठीक है, तो अब ये पेंसिल पोर्टल क्या है, इसको बनाया किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको 2017 में बनाया था। और ये इसका असली नाम है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ फॉर नो चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पोर्टल है जिसमें कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कनेक्ट करते हैं कि जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं कि जो नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी है उसको, उसके प्रोविजंस को कैसे हम अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं कि वो उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे चल रही है। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Pencil portal. So the Union Minister of Women and Child Development has appealed to all citizens that they should actively report the instances of child labor on the Pencil portal, or they can also do the same by calling the child helpline 1098. So what is World Against Child Labor? Okay, so this is a day especially on 12th June. It is celebrated on 12th June every year, and it was first launched by the International Labour Organization in 2002, and this 2021 is also the international year for elimination of child labor. Okay, so let us see something about Pencil portal. It is launched by Ministry of Labour and Employment. It was launched in the year 2017, and this the name of this portal is Platform for Effective Enforcement for No Child Labor. Okay, so it is a mechanism under which the central government, state government and district authorities along with all the stakeholders, they keep an eye over instances of child labor, and they try to implement the national child labor policy, and they keep an eye over the implementation and monitor this all mechanism of this monitor the mechanism of this child labor policy. Okay, so now let us see the next topic, which is aspirational districts program. तो जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया का है, जो इंडिया में है, उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की एक तरह से बहुत तारीफ़ की है। तो ये रिपोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो है बहुत अच्छा फोकस हुआ है हेल्थ और न्यूट्रिशन के सेक्टर पर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, और बहुत अच्छा रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग की जा रही है। सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो कि स्टेट और सेंटर लेवल पर हैं उनको अच्छे से जो है इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर एक तरह से कन्वर्ज करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कोलैबोरेट अच्छा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और उन्होंने कहा है ये 3C जो हैं, कन्वर्जेंस, कॉम्पिटिशन और कोलैबोरेशन, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अब कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? कन्वर्जेंस मतलब सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन तीनों पर ही जो है बहुत ही अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज्ड वे में प्लानिंग की जाती है, गवर्नेंस जो है वो अच्छी तरीके से दी जाती है, और ग्राउंड लेवल पर हमको देखने को मिल रहा है कि चेंज हो रहा है। फिर कंपटीशन क्या है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये आपस में भी अच्छा compete कर रहे हैं कि हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। जो इनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, ये अच्छी जो है परफॉर्मेंस खुद भी देना चाहते हैं कि हम बाकी जो हमारे 112, अब आप हमने कवर किया था ना कि 115 थे पहले, लेकिन वेस्ट बंगाल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो अब 112 हो चुके हैं। तो 112 जो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आपस में भी अच्छा compete कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। लेकिन जो कोलैबोरेशन है उस पर कहा है कि वैसे तो बहुत अच्छी कोलैबोरेशन हो रही है, लेकिन हमको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलोज और जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट्स जो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करके उनके साथ और ज़्यादा कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सजेशन दिया है UNDP ने। और UNDP ने ये भी बोला है कि जो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गवर्नेंस डेफिसिट चल रहा है, वहाँ पर अगर ये प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, अगर इंडिया अपनी जो ये एक्सपर्टीज़ है उसको शेयर करे वहाँ के साथ, अफ्रीका के साथ,
तो बहुत अच्छा एक हम एक तरह से उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो इस प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। अब इसको याद रखो, 1965 में इसको बनाया गया है। 1945 में यूएन के साथ नहीं है फाउंड हुई, इसको बाद में बनाया गया है 1965 में। अब ये है ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है एक तरह से, कि ये सारी कंट्रीज़ में जो यूएन की मेंबर स्टेट्स हैं उनमें से 170 कंट्रीज़ में जो है ये डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, जैसे कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, इनइक्वालिटीज़ को और एक्सक्लूजन को, इन सब को रिड्यूस करना, ये इसका मोटिव है। सारे मेंबर स्टेट्स में नहीं करता है, 193 के 193 मेंबर स्टेट्स में इसका जो है प्रोग्राम नहीं चलते हैं। सिर्फ 170 कंट्रीज़ जो मेंबर स्टेट्स हैं टोटल, उसमें से 170 कंट्रीज़ में इसका जो है ये काम करता है। ठीक है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो एजेंडा 230 के अंडर 2030 के अंडर हमने एक तरह से जो लेके आए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो भी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ही बनाए थे। ठीक है, तो 2030 एजेंडा जो है वो जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो फ्रेमवर्क है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आ जाए। ठीक है, इसलिए इसको जो है 2015 में हमने अडॉप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। अब ये गोल्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, सारी कंट्रीज़ को इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इसमें जैसे कुछ 17 गोल हैं ऐसे, टोटल 169 टारगेट्स हैं स्पेसिफिक, और इनमें जैसे ऐसे ऐसे गोल्स हैं कि इक्वालिटी, पॉवर्टी को एंड करना, हाँ, ताकि हम अच्छी तरह से एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बना सकें। ठीक है, 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था, तो अगले 15 साल तक, मतलब 2030 तक ये गोल्स को अचीव करने का टारगेट था। बट यस, ये गोल जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसको जो है कोई भी कंट्री, कोई बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर कि वो उनको ये फॉलो अचीव करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जो है वो हमने अभी 2-3 दिन पहले ही देखा है। 11 जून जो है, आई थिंक 12 जून की वीडियो थी, उसमें हमने देखा था ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप उस वीडियो, जिसको नहीं पता तो आप उस वीडियो में से देख लो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर टाइम वेस्ट करना हमको और ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Aspirational Districts Program. The United Nations Development Program of India has lauded the government's Aspirational Districts Program, and it has said that it is a very successful model of local area development. It can also be implemented in other countries like in Africa. Okay, so what this report has observed, let us see that. So this report has observed that this program has achieved tremendous. This program has achieved tremendous success in health and nutrition sector specifically, and it has helped these districts to effectively tackle the COVID-19 crisis. Okay, so they have been supporting the idea of aspirational districts. Okay, and they have seen that the entire program, from the monitoring, the real-time data monitoring to convergence of all government programs and schemes of both central and state governments, the entire thread of the planning that goes around aspirational districts program, it has been beneficial for these districts, and it has empowered the district administration in these districts to tackle with the COVID-19 crisis and in general also. Okay, so they have lauded that it's a unique collaborative nature of the program, which has allowed these local governments and other stakeholders to partner with the citizens and achieve the goals or targets which were set in original. Okay, so they have explored 3 C's: convergence, competition, and collaboration. So the first C is convergence. So basically it's all central and state and district management or administration, they're all converging their efforts. All central government schemes, state government schemes, or district administration schemes, all of them are synchronized, and this planning and governance is being implemented in a convergent manner. Okay, so similarly, these aspirational districts are competing with each other also, and they want to outperform each other. All the district administration officials, they have certain targets, they have their individual targets also, and they want to outdo each other also. Okay, so as we know that there are 112 aspirational districts. Originally there were 115 districts, but the West Bengal government in March 2020 they pulled out of this program. Okay, so
But there is a suggestion also. The UNDP has said that the collaborative nature of this program needs more refining. Okay, so they have said that apart from the central and state government and district administration, these aspirational district fellows or the technical support units, who are the stakeholders in any development program which is being implemented in this district, they also need to collaborate with the local governments, so that the efficient administration can be ensured and governance can percolate to the last man of these districts. Okay, so they want an inclusive development, and it can only be ensured if all the stakeholders collaborate their efforts jointly towards this program. Okay, so now let us see what is United Nations Development Program. So this program was this agency was formed in 1965 to trigger global development network. Okay, so they want to mainstream development into the United Nations framework, and it was formed for this reason in 1965, and it aims to achieve eradication of poverty and reduce inequalities and exclusion which currently prevails over these countries. And it is not implementing the programs in all the United Nations General Assembly states or UN member states. It is just implementing these schemes in 170 countries who are also the participants or the members of UN. Okay, so what is the most famous thing of United Nations Development Program? It is the Sustainable Development Goals. So in 2015, the UN adopted these at this Agenda 2030, which was originally formulated by this UNDP, and this Agenda 2030 calls for SDGs, the Sustainable Development Goals, and these goals are basically universal. There are total 17 goals with 169 specific targets, and it wants to involve all the governments, businesses, civil society, and people, so that they all can collaborate joint and utilize their joint efforts towards achieving these sustainable development goals. So you have to remember that these sustainable development goals, they are not legally binding. No state can be forced to adopt these goals or achieve the targets that are given under these goals. Okay, so as we've discussed this aspirational districts program just 2 or 3 days before, I'm not going to repeat the same. If there is any doubt, you can see the video of 12th June, I think, if I'm not wrong. Then let's move on to the next topic. So the next topic is Zardalu Mangoes. तो जो पहला कमर्शियल कंसाइनमेंट है जो हमारे जीआई सर्टिफाइड जरदालू मैंगोज हैं, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो बिहार के वहाँ पर मिलते हैं, वो अभी रिसेंटली उसको एक्सपोर्ट किया गया है यूके में. ठीक है, तो अपीडा जो है, उन्होंने बिहार गवर्नमेंट के साथ और इंडियन हाई कमीशन यूके के साथ मिलके और इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलके इसको जो है एक तरह से एक्सपोर्ट करने में हेल्प किया है. वहाँ के फार्मर्स को एक तरह से बहुत बेनिफिट होगा. ठीक है, तो अब जरदालू मैंगोज जो है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. उनको जीआई टैग मिला हुआ है 2018 में ही. ठीक है, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है. भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वहाँ पर ये इसको उगाया जाता है. ये बहुत लाइट येलो कलर के होते हैं और इसका बहुत ही एक स्पेशल अरोमा होता है. इसकी जो है एक तरह से जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है. ठीक है, सबसे पहले इसको भागलपुर रीजन में, वहाँ जो खड़गपुर के महाराजा थे, उन्होंने, रहमत अली खान बहादुर, उन्होंने इसको सबसे पहले उगाया था. ठीक है, अब अपेडा के बारे में देखते हैं. अपेडा जो है वो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है और इसको एक एक्ट के थ्रू 1985 में बनाया गया था. तो एक तरह से ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. और ये किसके अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो इसको कंफ्यूज मत करना, एग्रीकल्चरल या प्रोसेस्ड फूड आ रहा है तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर होगा. ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता है. ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट प्रमोशन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं. एक्सपोर्ट प्रमोशन और डेवलपमेंट जो कि शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स को इनको मैंडेट दिया हुआ है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स जो हैं, मीट के प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब को जो एक्सपोर्ट होना है, उसका प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट के प्रमोशन जो करनी है, उन सब का जो मैंडेट है वो अपेडा को दिया हुआ है इंडिया ने, कि ये ही जो है इसमें हेल्प करेंगे. ठीक है, तो अब इसमें रिसेंटली जो है इनको
शुगर जो हम अगर इंपोर्ट करें कभी, ठीक है, वैसे तो हम जनरली नहीं करते हैं, बट अगर कभी शुगर इंपोर्ट करनी पड़े तो भी जो अपीडा है वही हेल्प करता है, ठीक है, वही सारे ही मॉनिटर करता है कि हम कितना शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं। जनरली जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, जो कि सर्वेज कंडक्ट करते हैं और स्टडीज़ करते हैं कि कैसे हम सब्सिडाइज कर सकें अपने फार्मर्स को या फिर हमारे फूड प्रोसेसर्स को, ताकि जो है हमारे जो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट कंपेटिटिव हो सकें, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड्स भी फिक्स करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारे प्रोडक्ट्स अगर अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे तो वो जो है वो स्टैंडर्डाइज क्वालिटी के नहीं होंगे तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये स्टैंडर्ड भी फिक्स करते हैं और बताते हैं कि शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस स्पेसिफिकेशन के होने चाहिए ताकि जो है वो अच्छा एक्सपोर्ट हम कर सकें, ठीक है। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी देख लेते हैं। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो कि एक स्पेसिफिक जोग्राफी में मिलता है और उसकी रेपुटेशन ही उस जोग्राफी की वजह से ही जुड़ी होती है, उसको हम जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे देते हैं। जैसे ये मैंगो है, ये उसी भागलपुर रीजन में ही मिलते हैं, तो हमने उनको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया कि ये जरदालू मैंगो मतलब भागलपुर रीजन जो है बिहार का, वहाँ से ही मिलता है। ऐसे ही हमारी शाही लीची भी जो है वो भी वहीं पे मिलती है हमारे बिहार में, जो है मुजफ्फरनगर से, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो सबसे पहला जैसे जो हमारा प्रोडक्ट था, फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग दिया गया, वो दार्जिलिंग टी है। ये तो आपको सबको ही पता है, सबसे फेमस है ये, ठीक है। अब इंडिया में जो जीआई टैग है वो जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 के अंडर जो है उसको एक तरह से रेगुलेट किया जाता है। अब इंटरनेशनली इसके जो आईपीआर के अंडर जो आता है, ये पेरिस कन्वेंशन जो था प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का, उसके अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो है उनको जो है वो कवर किया जाता है। और डब्ल्यूटीओ में जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग्स होते हैं उनको कवर करता है, ठीक है, गवर्न करता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी को भी जीआई टैग मिल गया किसी भी एक प्रोडक्ट को, तो उसकी डुप्लीकेशन नहीं की जा सकती क्योंकि उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल चुकी है उस प्रोडक्ट को। तो ऐसा नहीं होगा कि जो जरदालू मैंगो है वो आप उठा के दिल्ली में बनाना शुरू कर दो और उसको कहोगे ये जरदालू मैंगो है, क्योंकि उसको लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है कि वो सिर्फ भागलपुर जो है वहीं पर जो इसको बनाया जा सकता है और वहीं के ये जरदालू जो है वहीं से ही एक्सपोर्ट हो सकता है। ऑफकोर्स आप इसको उगा सकते हो अपना दिल्ली में, लेकिन उसको आप ये नहीं कह के बेच सकते कि ये ओरिजिनल जरदालू जो हमारा मैंगो है ये वो है, ठीक है। तो now let us see this topic in English. Zardalu mangoes. So the first commercial consignment of Zardalu mangoes from Bhagalpur, Bihar has been exported recently to the United Kingdom. APEDA has collaborated with Bihar government, Indian High Commission of UK in West India, and they have just exported this product using the APEDA pack house in Lucknow. Okay, so let us see what is Zardalu mango. It enjoys a geographical indication tag since the year 2018, and it's a unique product from the Bhagalpur district of Bihar. It is famous because it has a special light yellow color, and it has a special aroma. Okay, so it differentiates this mango from the other varieties of mango. It was first planted in Bhagalpur by the Maharaja of Kharagpur, Rahmat Ali Khan Bahadur, and it is famous in this region. Okay, so now let us see what is this APEDA. APEDA is basically a statutory body which was formed under this act, Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority Act, and it was formed in the year 1985. It functions under the Ministry of Commerce and Industry. So don't confuse this APEDA with Agriculture Ministry. It is functioning under the Ministry of Commerce and Industry. So there are some scheduled products, some scheduled agricultural products such as fruits, vegetables, meat products, poultry, dairy products. All these products, they can only be exported with the mandate of APEDA. Okay, so it helps these the manufacturers of these products to export their products into the international markets. Okay, so generally we do not import sugar, but in case of an import, then we have to then this APEDA has been entrusted with the responsibility to monitor the import of sugar. Okay, so it also provides financial assistance. It conducts surveys and studies, and it also analyzes all such subsidy schemes which could be beneficial for the producers or farmers
who are engaged in the production of these scheduled products. Okay, so it also fixes the standards and specifications for these scheduled products, because otherwise they would not be able to, these products would not be able to compete in the international market. Okay, so now let us see what is this geographical indication tag. So it is a specific geographical tag which is attached to a product which has a reputation of being unique just because of that, because of its origin. Okay, so like Zardalu mango, it is famous because it is cultivated in Bhagalpur district of Bihar, and due to that geography, it is famous, and it gets the special indication or the special recognition of this specific variety of mango. Okay, so this GI tag is basically covered under the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act of 1999. Internationally, it's covered under, it's a part of IPR, and it is covered under the Paris Convention of Protection of Industrial Property. In the WTO, it is governed under the TRIPS agreement. It also enjoys legal protection if some product is given a GI tag, then it enjoys legal protection from duplication. Okay, so you cannot do you cannot grow Zardalu mangoes in Delhi and claim it to be the original Zardalu mango while you are exporting it or while you are selling it in the market. Okay, so the first product which got the GI tag was Darjeeling tea. Okay, so now let us see the next topic, which is New Shepherd. जो अमेजोन के फाउंडर हैं और जो बिलियनर भी हैं, तो जेफ बेसोस जो हैं, उनकी स्पेस कंपनी एक है, हमको पता है उसके बारे में, ब्लू ओरिजिन. ठीक है, तो उन्होंने ऑनलाइन ऑक्शन शुरू कर दिया है कि जो न्यू शेफर्ड जो एक तरह से रॉकेट सिस्टम है, उसमें कौन से जो हैं लोग आगे जाना चाहते हैं एक तरह से स्पेस टूरिज्म के लिए. ठीक है, तो ये न्यू शेफर्ड क्या है, जो सबसे पहले एस्ट्रोनॉट गए थे अमेरिकन, उनके नाम पर इसको रखा गया है, एलन शेफर्ड जो थे. ठीक है, अब ये एक ऐसा रॉकेट सिस्टम है कि ये एस्ट्रोनॉट्स या फिर रिसर्च, जैसे कि अब ये स्पेस टूरिस्ट्स को भी कार्बन लाइन के दूसरी पार लेकर जाएगा. अब ये कार्बन लाइन क्या है? कार्बन लाइन वो है एक तरह से इंटरनेशनल बाउंड्री है कि अगर आप इसको पार कर जाते हो तो अब यहाँ से जो है स्पेस शुरू हो गया है. ठीक है, तो ये उसके पार लेकर जाएगा, मतलब आपको स्पेस में लेकर जाएगा ये न्यू शेफर्ड, और ताकि जो है लोग जो है ये स्पेस टूरिज्म में जो है वो एंगेज हो सकें. ठीक है, जो टूरिस्ट स्पेस में जाना चाहते हैं उनको ये न्यू शेफर्ड जो है एक तरह से कमर्शियल एयरक्राफ्ट होगा, ये लेकर जाएगा, मतलब रॉकेट सिस्टम. ठीक है, अब स्पेस टूरिज्म जो है, अब ये जनरली क्या होता है, स्पेस टूरिज्म में ऐसा नहीं होता कि वो कुछ रिसर्च के लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक रिक्रिएशनल या फिर लेजर पर्पस के लिए ही जा रहे होते हैं. ठीक है, बेसिकली नॉन साइंटिफिक पर्पस के लिए जाते हैं. सबसे पहली जो है कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो थी, वो स्पेस एडवेंचर्स नाम की थी, 1997 में बनाई गई थी वो, और ओनली प्राइवेट कंपनी जो थी जो कि पैसा लेकर जो है वो लोगों को ऑर्बिटल स्पेस में लेके जाती थी. ठीक है, 2004 में सबसे पहले जो है एक माइक मेलविल नाम के जो पर्सन थे, वो फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट थे, वो कार्बन लाइन से आगे तक गए थे. ठीक है, so now let us see this topic in English. New Shepherd. So the founder of Amazon, Jeff Bezos, his company has this company named Blue Origin. It has started the online auction for the first seat on New Shepherd. So this New Shepherd is basically a rocket system which is planning to take space tourists to the space. Okay, so this New Shepherd is named after Alan Shepard, who was the first American to go to the space, and it's a rocket system which is designed to take these space tourists and beyond the Kármán line. So this Kármán line is an internationally recognized boundary of space. Once you cross this line, you are officially entering the arena of space. Okay, so this New Shepherd wants to provide cost-effective access to space for all those tourists who want to explore the space. Okay, so what is this space tourism? So space tourism gives normal people like you and me, of course not you and me because we don't have that much money, of course. Okay, so all those people who are not from scientific background, they are given an opportunity to explore the space, and
go into that area or beyond a common line for non-scientific purpose. So these tourists will not be going into the space for any scientific research. They are going there for only recreational or leisure purposes. Okay, so the first company, namely Space Adventures, it started in 1997, and it was the only private company to send customers to the orbital space or beyond the common line in return for some money. Okay, so in 2004, the first private astronaut was sent to the space. He was named as Mike Melville. Of course, you're not going to. Of course, you don't need to remember all these names and all that. I'm just giving you an idea that the timeline, how this space tourism industry has evolved over the period of time. Okay, so now let us see the next topic, which is Pacific. तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को के बारे में पता करने के लिए अपकमिंग स्काई सर्वेस करने जा रही हैं बहुत सारी एक तरह से एजेंसीज. ये एक प्राइवेटली फंडेड प्रोजेक्ट है. ठीक है, अब ये स्टार्स को स्टडी करेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि जो यूनिवर्स है वो कैसे ओरिजिन हुआ है उसका. ठीक है, तो स्काई का सर्वे करने जा रहे हैं और बहुत सारे वर्ल्ड के लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंडिया में से एक इन्फोसिस भी है और भी बहुत सारे हैं, वो सब इसमें फंड कर रहे हैं कि हम पता तो लगाएं कि जो है हमारा यूनिवर्स पैदा कैसे हुआ है. ठीक है, अब ये पैसिफिक का नाम क्या है? पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट. अब ये पूरे स्काई को सर्वे करेगा और ये पोलराइजेशन को सर्वे करेगा. पोलराइजेशन क्या होता है कि जो स्टार्स में से लाइट आ रही है, अब समझ लो, आपको पता है ना कि अब ये जो हमारे स्टार्स हैं वो पता नहीं कितने मिलियन लाइट ईयर्स अवे हैं हमसे, या पता नहीं कितने थाउजेंड या लैक्स मिलियन लाइट ईयर्स अवे हैं. मतलब कि बहुत पहले जो है, मतलब वहाँ से लाइट चली है, पता नहीं कितने टाइम बाद आपको अब वो देखने को मिल रही है. तो अब उसमें पूरे पीरियड में वो लाइट जो है वो कहीं ना कहीं रोटेट हुई होगी या फिर वो रिफ्लेक्ट हुई होगी. इस चीज़ को पूरे हम सर्वे करेंगे तो उसी से हमको पता लगेगा कि जो यूनिवर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. ठीक है, या फिर वो कब ओरिजिनेट हुआ है. जितनी भी मिस्ट्रीज़ हैं यूनिवर्स की ओरिजिन के ऊपर, वो सारी हमको इसी से ही पता लगेंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर जितने भी हमारे स्टार्स हैं उसको हम अगर उसकी लाइट को हम एक तरह से सर्वे कर पाएंगे. ठीक है, तो अब ये वर्क कैसे करेगा? इसमें 2 हाई टेक ऑप्टिकल पोलरीमीटर्स लगेंगे. पोलरीमीटर्स क्या होते हैं? एक ऐसा एक तरह से डिवाइस जो कि रोटेशन, जो लाइट की रोटेशन हो रही है उसको पकड़ता है. कि मतलब अगर समझ लो लाइट रोटेट होके भी हमारे पास आ रही है तो हमको कैसे पता लगेगा कि लाइट ओरिजिनेट कहाँ से हुई है. ठीक है, अगर लाइट ऐसे जिग जैग फॉर्मेट में आई है तो हमको तो सिर्फ एक ही जगह से पता लगेगा ना कि लाइट कहाँ से आ रही है, सीधे उससे ही पता लगेगा. लेकिन ये पोलरीमीटर्स जो हैं हमको बताते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट होकर लाइट आ रही है. ठीक है, सो 2 ऐसे हाई टेक ऑप्टिकल पोलरीमीटर्स लगाए जाएंगे जो कि नदर्न और सदर्न स्काई दोनों को एक ही टाइम पर जो है वो ऑब्जर्व करेंगे. और जो इवन बहुत ही फेंट हो चुके हैं स्टार्स, उनको भी जो है उसमें से भी जो लाइट आ रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे. एक मैग्नेटिक फील्ड टोमोग्राफी जो है उसकी पूरी मैपिंग की जाएगी पूरे हमारे स्पेस की. अब टोमोग्राफी क्या होता है? टोमोग्राफी का मतलब होता है कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट में से भी जो लाइट अगर पास हो जाए, या फिर जैसे अब समझ लो ह्यूमन बॉडी है. अब ह्यूमन बॉडी के अंदर हम एक तरह से कोई भी अगर ऐसा हम टेस्ट करें जिससे हमको पता लग जाए कि ये अंदर लीवर है, ये अंदर स्टमक है एंड ऑल दैट, तो उसको हम कहते हैं टोमोग्राफी. ठीक है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर की पूरी अगर हम मैपिंग, आपको हम ऐसा तो नहीं करते ना कि आपकी स्किन फाड़ के फिर हम मैपिंग करते हैं उसकी. आपको नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की हम मैपिंग जो है वो टोमोग्राफी से ही कर लेते हैं. तो ये मैग्नेटिक फील्ड टोमोग्राफी जो है वो स्पेस में भी यूज़ की जा रही है. ठीक है, कि अब समझ लो कुछ प्लैनेट्स के पीछे क्या है या कुछ एक डस्ट के पीछे क्या है, हमको ये सारा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड टोमोग्राफी की मैपिंग के थ्रू ही पता लगेगा. हम उससे एक 3 डायमेंशनल मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं जो कि हमारी पूरी गैलेक्सी का एक तरह से शुरू में तो हम जो है वो 3 डायमेंशनल मॉडल क्रिएट करेंगे और धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट बढ़ता रहेगा और हम ये ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को पता करने में हमको हेल्प करेगा. So now let us see this topic in English, Pacific. So there have always been mysteries around the origin of universe. So but now a project is being funded by world's leading institutions, and India is also partner in that project, and it will survey the sky to study stars. So basically, if you start studying the stars, you have a chance that you would be able to see the expanse or the origin of the universe. Okay, so
what is this specify? It's a polar area stellar imaging in polarization high accuracy experiment. It's a sky surveying project. It will study the polarization in the light which is coming from the stars. So the polarization is basically when light rotates. Okay, so you do not see which from where the light is originally coming. So only this polarimeters help you see that from this place this light is coming. Okay, so it may be possible that a star is emitting light from somewhere else and you are getting it to this location. Okay, so in that case you would not be able to perfectly map the location of the stars. That's why we are using this polarimeters. The two high tech optical polarimeters will be installed and they will help us to map the entire sky or the entire space, and it will capture all the stars of the universe. It will, of course, it will try to capture all the stars of the universe, so that a magnetic field tomography mapping of this sky can be done. Okay, so what is the meaning of tomography? So tomography is basically anything, a technique through which you can penetrate the opaque objects. Okay, so like you go for CT scan, your body, your body, the machine basically maps the entire organs in your body, okay, without even, of course, peeling off your skin. So this tomography will be done of the entire space, and it will see what lies behind this field of dust, or what lies behind this magnetic field structure of this galaxy. So it will basically create a three-dimensional model of the sky or the space, and it will help us to go back to the time and see how the universe originated at the beginning. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.